जय हिंद। एक क्लास में पढ़ा ब्लैक बुक ऑफ जनरल अवेयरनेस बुक रो टॉप 500 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जोटा कि बार बार आपण परीक्षा देखने मिलती सब क्वेश्चन सेटा मुझे नहीं आसी वीडियो आम सब क्वेश्चन देखा जोटा कि बहुत थोड़ा क्वेश्चन पचार आगामी अपकमिंग एग्जाम हेल्पफुल हम। हाउ मेनी क्लासिकल डांस फ्रॉम एग्जिस्ट इन इंडिया? आंसर होची 8। 8टी क्लासिकल डांस अच्छे आम इंडिया कौन कौन आउ कौ स्टेट रु यहाँ भी मन रखिए। फास्ट हूँ भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथक कली केरला, मोहिनीअट्टम केरला। मन रखिए केरला रु दुईटा क्लासिकल डांस होची कथक कली मोहिनीअट्टम, कथक कली मोहिनीअट्टम फ्रॉम केरला। अब ओडिसी ओडिशा आ मणिपुरी मणिपुर ये दुईटा इजिली मन रही स्टेट नाम अच्छी ओडिशा ओडिसी ओडिसी ओडिशा आउ मणिपुरी डांस मणिपुर आउ सात्रिया आसाम स्टेट मन रखिए सात्रिया क्लासिकल डांस होची आसाम आउ कुचिपुड़ी होची आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। मन रहा 8टी क्लासिकल डांस होची भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथक कली मोहिनीअट्टम केरला, ओडिसी ओडिशा, सात्रिया आसाम, मणिपुरी मणिपुर, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर सेट आउट इन पार्ट IV-A? पार्ट IV-A रे केतटा फंडामेंटल ड्यूटीज अच्छी तो यहाँ आर्टिकल 51A रे पार्ट IV अच्छी केतटा ना 11टा फंडामेंटल ड्यूटीज रोची। देखो ये लिखाई रिपीटेड के 25 टाइम TCS जो सब एग्जाम होची तादे 25 रिपीटेड एटा हेची ये सब रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट, in the year 1978 the dash amendment eliminated to the right to acquire, hold and dispose of property. Right to property as fundamental right एटा हम डिस्पोज कर जायतला केततम अमेंडमेंट रे ना 44th अमेंडमेंट हला 44तम अमेंडमेंट आट रे 1978। नेक्स्ट, the Indian National Congress was established when 72 delegates from all over the country met at Bombay in December. केबे 72 जन जो डेलीगेट रहितला हमरो कोन बॉम्बे रे इंडियन नेशनल कांग्रेस रो प्रेसिडेंसी को 1885 रे हला आईएनसी रो फर्स्ट सेशन हेतला 1885 रे 72 जन हेतल थले। नेक्स्ट क्वेश्चन, which words was inserted in the preamble by the 42nd amendment 1976 of the Constitution of India? को टर्म माने को वर्ड एथरे इंसर्ट कर देतला ऐड कर देतला 42 अमेंडमेंट एक्ट केबे हेतला 1976 रे 42 अमेंडमेंट हेतला सेथरे सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी ऐड हेतला सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी ऐड हेतला। नेक्स्ट, the directive principle of state policy in the Indian Constitution was borrowed from which country? DPSP हमर को कंट्री रु बोरो होइछि को कंट्री रु आसी छि एटा होछि आयरलैंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड कंट्री आसी छि एटा रिपीटेड 21 टाइम्स इन TCS एग्जाम। तो आपनकर फ्रीक्वेंसी एग्जाम पय भी एटा इंपोर्टेंट अछि कारण बार बार एक परीक्षा आछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, with which musical instrument in हरिप्रसाद चौरसिया एसोसिएटेड? हरिप्रसाद चौरसिया से एसोसिएटेड थिले कोन फ्लूट रे फ्लूट हम जो बंसी बजांती फ्लूट रो एसोसिएटेड थिले इंस्ट्रूमेंट रो एसोसिएटेड। ज्योतिबा फुले फाउंडेड द सत्य शोधक समाज इंग्लिश ता ट्रुथ सीकर सोसाइटी केबे सेटा करथिले फाउंड करथिले ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज 1873 रे केबे 1873 रे। The Lahore session of Indian National Congress held in 19 December 1929 presided by Jawaharlal Nehru is significant because it passes the resolution to demand Purna Swaraj and tricolor flag was unfurled to the first time. लाहौर सेशन हेतला 19 डिसेंबर 1929 रे जवाहरलाल नेहरू कोन थले प्रेसिडेंट थे से समय रे एठी हमर रेजोल्यूशन पास हेतला पूर्ण स्वराज रो परीक्षा बहुत सास्ती पूर्ण स्वराज कोर्ट पास हेतला ना 19 डिसेंबर 1929 लाहौर सेशन रे एतले भी जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे आउ फर्स्ट टाइम हमर ट्राइकलर फ्लैग एठी कोन हेतला अनफोल्ड हेतला फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन को, when were the initial 10 fundamental duties of the Indian citizen incorporated through 42
अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन केबे एटा इनिशियली थला ना 10टा फंडामेंटल थला 1976 रे कोन हेतला ऐड हेतला 11टा हेतला फंडामेंटल ड्यूटीज ठीक अछि एटा हमें प्रीवियस कोर्स देखथले केते नंबर जे हमर से नंबर 2 रे थला क्वेश्चन नंबर 2 रे ठीक अछि तापरे which article of the Constitution of India abolishes the concept of untouchability and prohibits its practice in any shape or form untouchability abolish जो होची एटा को आर्टिकल अछि आर्टिकल 17 हला आर्टिकल 17 17 मन रखियो untouchability छुआ अछि तो ए सब बेदब रखिबा ना आर्टिकल 17 which vitamin is needed for healthy immune system low light vision and healthy skin which vitamin is needed for healthy immune system हमरा immunity system टा healthy रहबो को vitamin need करे और low light vision और healthy skin रहबो एटा vitamin A हैला vitamin A हम पई दरकार who revived Kuchipudi started his own Kuchipudi dance academy in Chennai and received Padma Bhushan in the year 1998 the Kuchipudi जो डांस टा जो वार्ड आस्तला तांको कुचिपुडी डांस एकेडमी तला चेन्नई रे से पद्म भूषण भी तांको दिया 1998 रे तांको नाम होची गुरु भेम्पाती चिन्ना सत्यम मनखिबे गुरु भेम्पाती चिन्ना सत्यम एमती परीक्षा आछि जे नाम दे दिथिबो से को डांस रिलेटेड पचाय थाए तो मन करे भेम्पाती चिन्ना सत्यम जे कोन कुचिपुडी डांसर थिले पद्म भूषण तांको देथिला 1998 रे नेक्स्ट क्वेश्चन according to census 2011 which state of India has the lowest population 2011 सेंसस जनगणना अनुसार को राज्यर पॉपुलेशन कम थिला सिक्किम आंसर होची सिक्किम फंडामेंटल ड्यूटीज आर कंटेंट विथ which article of the constitution of India fundamental duties contained within which article article 51A हला article 51A हमें एटा भी पढिथिले एटा बुल्लै बंके पचाछि ठीक अछि मन कि आर्टिकल 51 ए रे आड अछि आ पार्ट आई भी ए रे अछि पार्ट आई भी ए रे तापर नेक्स्ट देखंतु द भागीरथी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम गौमुख ग्लेशियर इट मीट्स द अलकनंदा एट देवप्रयाग फ्रॉम रिवर डैश इट कोनला ना गंगा आंसर कोन गंगा भागीरथी रिवर ओरिजिनेट कोठी छि ना गौमुख ग्लेशियर जु इट मीट्स कोड मीट्स कला अलकनंदा एट देवप्रयाग हला फॉर्म हला गंगा गंगा इडु फॉर्म हला कोडो अलकनंदा देवप्रयाग मीट संगम स्थल नेक्स्ट क्वेश्चन द परमानेंट जमींदारी सेटलमेंट सिस्टम was introduced by which governor general of British East India Company 1793 आंसर बो लॉर्ड कॉर्नवालिस लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस करथला परमानेंट जमींदारी सेटलमेंट हला ब्राह्मण समाज was founded by which social reformer of British India in 1828 1828 ब्राह्मण समाज के फाउंड करथिले राजा राममोहन राय के राजा राममोहन राय फाउंड करथिले ब्राह्मण समाज 1828 रे नेक्स्ट क्वेश्चन पंडित शिव कुमार शर्मा an Indian musician and composer was the foremost exponent of the पंडित शिव कुमार से थिले कोन संतूर संतूर गोटे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हला संतूर के बजंती पंडित शिव कुमार शर्मा आ फ्लूट के बजंती कोन हरिप्रसाद चौरसिया फ्लूट ठीक अछि आ शिव कुमार शर्मा संतूर मनला नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत व्हिच लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल रूल वाज फाउट बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर इन द ईयर केबे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होइतिला 1526 रे काका भितरे ना इब्राहिम लोदी आ बाबर मध्ये होइतिला इब्राहिम लोदी आ बाबर मध्ये होइतिला बाबर एको जीतिला फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत रे बाबर इब्राहिम लोदी 1526 रे नेक्स्ट द हर्षचरित इज ए बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन द रूलर ऑफ कनौज कंपोज इन संस्कृत बाय हिज कोर्ट पोएट कवि को नाम थला कोन बनभट्ट हला बनभट्ट लिखिसेन कोन हर्षचरित का विषय रे हर्षवर्धन
विषय रूलर कन्नौज रूलर थे किए हर्षवर्धन जो लिखी बायोग्राफी ता ना हूँ हर्षचरित बनभट्ट लिखी है संस्कृत पोएट बनभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर where the air density is highest which lies up to 16 km above equator and 8 km over polar region where vital atmospheric process like climatic and weather condition take place is known as troposphere ला troposphere रो डेफिनेशन दे दीची एटा परीक्षा पचारला प्राय 1600 पचारची रिपीटेड क्वेश्चन the lowest layer of the atmosphere where air density is highest and air density कौन अधिक रहे और लाइज अप टू 16 किलोमीटर एबव इक्वेटर है 16 किलोमीटर एबव इक्वेटर एंड 8 किलोमीटर ओवर पोलर रीजन मन रखियो है तबे द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट व्हिच स्टार्टेड इन सितंबर 1920 वाज विड्रॉन बाय गांधीजी ड्यू टू चौरी चौरा उत्तर प्रदेश इंसिडेंट चौरी चौरा इंसिडेंट उत्तर प्रदेश तो होता तापर कौन विड्रॉ करते हैं केबे ना 1922 फेब्रुआरी मास जो विड्रॉ करते 1922 फेब्रुआरी मास आरंभ होता 1920 सेप्टेम्बर नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द स्टेट शैल endeavor to secure for the citizen a uniform civil code throughout the territory of India हम को आर्टिकल जोटा कि कौन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो पारिबो सेटा होची आर्टिकल 44 हला आर्टिकल 44। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिफॉर्म सिविल कोड कहया गले कोन सब रिलीजन पई सेम लॉ हवा दरकार सेम राइट समस्त को मिलिया दरकार किछिटा क्षेत्र रे कोन अलग अलग रिलीजन पई अलग अलग आईन कानून भी अछि। गांधीजी दांडी मार्च नेक्स्ट क्वेश्चन गांधीजी दांडी मार्च व सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्टेड ऑन 12th March 1930 फ्रॉम साबरमती आश्रम इज एसोसिएटेड विथ एटा एसोसिएटेड विथ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आईनी अमान्य आंदोलन ना सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट गोटे था दांडी मार्च जो स्टार्ट होता सॉल्ट सत्याग्रह 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम रु दांडी पर्यंत है तेणुक ना दांडी मार्च। तब नेक्स्ट देखो तब नेक्स्ट क्वेश्चन द केमिकल नेम ऑफ द एसिड प्रेजेंट इन विनेगर इज कॉल्ड एसिटिक एसिड केमिकल नेम ऑफ द एसिड प्रेजेंट इन विनेगर विनेगर रे को एसिड थाए सेटा होची एसिटिक एसिड। हु रोट आईनी अकबरी अकबर नामा जोटे आईनी अकबरी अकबर नामा एटा के लिखछन्ती अबुल फजल द टाइटल ऑफ 3 वॉल्यूम ऑफ बायोग्राफी ऑफ अकबर अकबर बायोग्राफी जोटा कि आईनी अकबरी बा अकबर नामा एटा लिखितले अबुल फजल मन रखिबे अबुल फजल आ बनभट्ट का लिखितले हर्षवर्धन हैला बनभट्ट लिखितले हर्षवर्धन अबुल फजल ले आईनी अकबरी बा अकबर नामा। नेक्स्ट विंग्स ऑफ फायर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज ही विंग्स ऑफ फायर एटा ऑटोबायोग्राफी कहार ना एपीजे अब्दुल कलाम है ये जो बुकटा विंग्स ऑफ फायर एटा हूँ एपीजे अब्दुल कलाम ऑटोबायोग्राफी मन रखिए ये देखो 14 थर रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ जीक सब क्वेश्चन मुझे कहि सबतक मोस्ट 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 इंपोर्टेंट तो भलसे मन रखु। नेक्स्ट देखो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हिच स्टेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन 2011 सेंसस अनुसार को स्टेट रो डेंसिटी माने घनत्व अधिक था को स्टेट याउची आंसर होची बिहार बिहार ठीक है डेंसिटी माने कोन कम एरिया रे बहुत सारा पॉपुलेशन थियो ना डेंसिटी बिहार राज्य रो डेंसिटी अधिक था 2011 जनगणना अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 व्हाट आर द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया हमर पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया जो केते थला सेटा होची 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर माने गोटे स्क्वायर किलोमीटर भितर 382 पर्सन रहउथले हैला केते जन रहउथले 382 जन रहउथले गोटे स्क्वायर किलोमीटर भितर। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया व्हिच स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया को राज्य अधिक पॉपुलेशन थिला 2011 जनगणना अनुसार सेटा होची उत्तर प्रदेश गोटे उत्तर प्रदेश सबटा कम थिले
सिक्किम हाईएस्ट थला उत्तर प्रदेश ठीक अछि। नेक्स्ट चिकन पॉक्स इन्फ्लुएंजा हेपेटाइटिस डेंगू पोलियो रैबीज एड्स rinderpest swine flu and common cold are caused by which microorganism आंसर होची भाइरस। देखो एटा बहुत सारा क्वेश्चन हे परिबो गोटे गोटे से पचरिबो तेन करी एटा आपन को दे दी एमती चिकन पॉक्स पचरथबो एटा को रिलेटेड हेटा होची भाइरस डिजीज एन पचर हेपेटाइटिस जे को टाइप ऑफ डिजीज बैक्टीरिया फंगस की भाइरस त आंसर भाइरस सेबली बहुत सारा क्वेश्चन एटा हे परिबो हला से मिसे के दे दीची 14 थो ए टाइप क्वेश्चन पड़सी कोन कोन मन रख दियंतु भाइरस डिजीज कोन सब हम कॉमन जोटा ठंडा हो जो होची कॉमन कोल्ड सेटा भी भाइरस चिकन पॉक्स इन्फ्लुएंजा हेपेटाइटिस डेंगू पोलियो रेबीज ये सब कोन भाइरस एड्स आउ रिंडरपेस्ट स्वाइन फ्लू ठीक अछि एटा मन रखिबे भाइरस जनित कोन रोग। तापरे देखो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया व्हिच गवर्नर जनरल डिवाइस द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ए पॉलिसी ऑफ annexation जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जोटा हड़प नीति को जाय हड़प नीति तो एटा किला को थिला लॉर्ड डेलहाउजी हला लॉर्ड डेलहाउजी। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फंडामेंटल ड्यूटीज were included in the Indian Constitution on the recommendation of कहा recommendation रे fundamental duties आड हेतला include हेतला सोरन सिंह कमिटी ये सोरन सिंह कमिटी द्वारा include हेतला ठीक अछि। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु द फेमस सेहनाई प्लेयर ऑफ इंडिया इज सेहनाई के बोलते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान होचंदी कोन सेहनाई प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी फॉर द कॉज ऑफ इंडिगो फार्मर एग्नेस्ट तीन काठिया सिस्टम वाज ऑब्जर्व एट कोठी तीन काठिया सिस्टम विरुद्ध रे मतलब कोन जो गांधी जी विद्रोह करतले चंपारण सत्याग्रह हेतला 1917 मन रखिबे चंपारण बिहार रो ओटा जगह चंपारण 1917 मन हेतला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह नाम रे फेमस एटा गांधी जी को फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया होची चंपारण 1917 करतले हला इंडिगो हम जो नील चाष करती हला इंडिगो हेति पे हेतला कहा विरुद्ध ना तीन काठिया सिस्टम जो इंग्रेज आनितले ता विरुद्ध रे एटा आंदोलन हेतला। नेक्स्ट क्वेश्चन द पार्लियामेंट has power to amend the provision of the Constitution of India. Which article of the Constitution confirm this power on the Parliament? माने को आर्टिकल लिखा है पावर अछि जे कॉन्स्टिट्यूशन कोन अमेंड कर परिबो माने संशोधन कर परिबो कोन से आर्टिकल एटा होची आर्टिकल 368 368 रे मन रखिबे एटा कोन ना अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 368 मन रखिबे। नेक्स्ट the total value of goods and service produced in a country during a given period is called that is national income और national income रो definition माने इकोनॉमिक्स पे तो definition तो पता जाए तो मन रखिबे कोन national income ना total value of goods and services produced in a country during a given period is called हमरो देशर कोन गोटे सर्टेन टाइम रे हम goods and services प्रोड्यूस होची तार टोटल वैल्यू सीधा होची नेशनल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन रिवोक्ड इन 2019 2019 रे को आर्टिकल ता हटाई देथिला होची आर्टिकल 370 370 ठीक अछि। तापरे जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाला लद्दाख और जम्मू कश्मीर ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1906 आट कोटी ना ढाका को बांग्लादेश है बांग्लादेश कैपिटल ढाका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेठी फर्स्ट एस्टैब्लिश हेतला 1906 रे। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हिच स्टेट इन इंडिया हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट हला हाईएस्ट डेंसिटी भी मानो कि बिहार और लोएस्ट लिटरेसी रेट भी थला बिहार हला उठला बिहार मन के लोएस्ट लिटरेसी मान साक्षरता हार। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन
According to 2011 census, which Indian state has the highest sex ratio females per 1000 males greater than 1000? ହଉଛି କେରଲା ହେଲା। କୋଉଠି କେରଲାରେ ହଉଛି ହାଏଷ୍ଟ ସେକ୍ସ ରେସିଓ ଥିଲା, ମାନେ ପ୍ରତି ହଜାରରେ ମାନେ ହଜାରେ ମେଲରେ ହଜାରେ ପୁଅରେ କେତେ ଜଣ ଝିଅ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଠି କ'ଣ ଥିଲା କେରଲାରେ ହଜାରେ ପୁଅରେ ହଜାରରୁ ଅଧିକା ଝିଅ ଥିଲେ, ସେଟା ହଉଛି କେରଲା ହେଲା, ହାଏଷ୍ଟ ସେକ୍ସ ରେସିଓ ଥିଲା। Next question. According to the Constitution of India, who is the ex-officio chairman of the Rajya Sabha? Rajya Sabha ex-officio chairman किए हूँ भाइस प्रेसिडेंट, ठीक अच्छे। भाइस प्रेसिडेंट हूँ कौन राज्य सभा चेयरमैन ex-officio chairman, ठीक अच्छे। After over 21 years stay in South Africa, गांधीजी रिटर्न टू इंडिया। गांधीजी साउथ अफ्रिका 21 वर्ष रहिले, तापर इंडिया केबे आस्थिले जनवरी 9 2015 सॉरी जनवरी 9 1915 जनवरी 9 1915 ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 9th ଜାନୁଆରୀ କୁ सेलिब्रेट करू प्रवासी भारतीय दिवस एनआरआई डे हैला। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन, अपर्णा साथिसान ए यूएस बेस्ड एक्सपोनेंट ऑफ भारतनाट्यम कुचिपुड़ी won the prestigious अभिनंदन स्वरूप नेशनल अवार्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट इंडियन क्लासिकल डांस इन व्हिच ईयर? से 2021 रे पाइथिले, ठीक अछि 2021 रे पाइथिले अपर्णा साथिसान से यूएस बेस्ट एक्सपोनेंट जे कि भारतनाट्यम सहित कुचिपुड़ी डांस भी करती, अभिनंदन सरोजा नेशनल अवार्ड रे सम्मानित कराई। एटा क्लासिकल डांस से डांस करती कौन भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी है। हम पढ़ते कौन भारतनाट्यम को स्टेट रो क्लासिकल डांस, कमेंट कहूँ भारतनाट्यम कुचिपुड़ी को स्टेट रो क्लासिकल डांस मन रखिए 2021 सम्मानित कराइला अपर्णा साथिसान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन? बेरी एटा कॉज को विटामिन विटामिन B1 बा थायामिन अभाव रु कोन होय थाए बेरी होय थाए, विटामिन B1 बा थायामिन अभाव रु बेरी होय थाए। इन व्हिच ईयर द फर्स्ट एवर एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली रे फर्स्ट टाइम एशियन गेम्स खेल होता केबे 1951 रे मन रखिए न्यू दिल्ली रे होता 1951 न्यू दिल्ली रे एशियन गेम। The chemical name of a baking soda is sodium hydrogen carbonate NaHCO3, sodium hydrogen carbonate NaHCO3 कार केमिकल नेम ना बेकिंग सोडा मन रखिए बेकिंग सोडा रो केमिकल नेम होची सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ठीक अच्छे। तो केमिकल फॉर्मूला NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया व्हिच ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल? लॉन्गेस्ट बा लार्जेस्ट रिवर पेनिसुलर इंडिया ता होची गोदावरी है, गोदावरी मन रखिए इंडिया द लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर होची गोदावरी। द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY was implemented by the government of India in 8th April 2015 to provide collateral free loans up to dash for facilitating self-employment and so 10 lakh ला प्रधानमंत्री मुद्रा योजना रे 10 लाख पर्यंत कोन लोन दिया जाउतला हला 2015 8 अप्रैल एटा इंप्लीमेंट कराइछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस फंडामेंटल ड्यूटीज हला को अमेंडमेंट अनुसार फंडामेंटल ड्यूटीज आड हेतला कोन हेतला अमेंडमेंट हेतला 42तम अमेंडमेंट हला 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच डांस इज परफॉर्म बाय वुमेन ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र वुमेन को द्वारा को डांस करा जाए ना लाबनी डांस मन रखिए लाबनी महाराष्ट्र फेमस गोटे फोक डांस चले लोक नृत्य लाबनी है, लाबनी हूँ महाराष्ट्र फेमस फोक डांस महाराष्ट्र वुमेन एटा करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एब्लिश सती सिस्टम इन 1829 बाय डिक्लेयरिंग इन आर्ट इट एन ऑफेंस? 1829 रे किए सती सिस्टम को कौन आबोलिश करते? विलियम बेंटिक मन रखिए विलियम बेंटिक राजा रामन साहय एटा
आबोलिश होता सती सिस्टम जोटा कि स्वामी मरीगला स्त्री को कौन अग्नि डेक जीवन देवा पड़ता है आत्माहुति देवा पड़ता से सिस्टम आबोलिश करते विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इंडियन क्रिकेट प्लेयर ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल प्लेइंग इट माय वे। प्लेइंग इट माय वे ऑटोबायोग्राफी कहार को क्रिकेटर ना फेमस सचिन तेंदुलकर किए सचिन तेंदुलकर मन रखिए ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इट माय वे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इंस्टीट्यूशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग द जीडीपी नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। व्हिच इंस्टीट्यूशन इज रेस्पॉन्सिबल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। नेशनल इनकम डेफिनेशन टी पूर्व पढ़ते है तार कैलकुलेटिंग दायित्व कह सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस सीएसओ ऑफिस एटा करे जीडीपी कैलकुलेटिंग जीडीपी फुल फॉर्म कौन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस रेस्पॉन्सिबिलिटी रोची नेशनल इनकम कैलकुलेटिंग करबा ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज उस्ताद जाकिर हुसैन primarily associated with उस्ताद जाकिर हुसैन से को रिलेटेड को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तबला है तबला होचंदी कोन उस्ताद जाकिर हुसैन तबला प्लेयर उस्ताद जाकिर हुसैन तबला प्लेयर मन रखु उस्ताद जाकिर हुसैन तबला प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हु एस्टैब्लिश द आर्य समाज एंड इन व्हिच ईयर। आर्य समाज के फाउंड करथिले केबे तो तो 13 थर रिपीटेड देखो आर 13 13 थर रिपीटेड है टीसीएस एग्जाम में केवल। स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 रे आर्य समाज फाउंड करथिले स्वामी दयानंद सरस्वती ठीक अछि स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज फाउंड करथिले 1875 रे। नेक्स्ट क्वेश्चन हु फाउंडेड द गद्दार पार्टी ए रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन इन सैन फ्रांसिस्को इन द यूएसए। यूएसए शहर सैन फ्रांसिस्को रे गद्दार पार्टी फाउंड करथिले लाल हरदयाल एंड सोहन सिंह भाकना 1913 रे गद्दार पार्टी फाउंड करथिले लाल हरदयाल एंड सोहन सिंह भाकना 1913 रे कोठी ना सैन फ्रांसिस्को यूएसए रे। नेक्स्ट क्वेश्चन हु सेड स्वराज फ्रीडम इज माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट ये कहते बाल गंगाधर तिलक कौन कहते स्वराज मोर जन्मगत अधिकार है कहते बाल गंगाधर तिलक। डैश कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 provided for free and compulsory elementary education right to education to children between the age group of 6 to 14 इटा को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अनुसार एटा हेतला ना 86तम अमेंडमेंट एक्ट केबे ना 2002 रे प्रोवाइड कला कोन ना 6 वर्ष रु 14 वर्ष पिलांग पर्यंत फ्री एजुकेशन दिया जिवो कंपलसरी एलिमेंटरी एजुकेशन दिया जिवो हला आर्टिकल 21 ए रो अछि पार्ट 3 मन के पार्ट 3 आर्टिकल 21 ए रे आड अछि 6तम अमेंडमेंट एक्ट रे 2002 हेतला कोन 6 रु 14 वर्ष पर्यंत कोन फ्री एंड ए कंपलसरी एलिमेंटरी एजुकेशन दिया जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन द स्टोरी of my experiment with truth an autobiography of a dash ये जो महात्मा गांधी का गोटे ऑटोबायोग्राफी थला स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ ये जो स्टोरी एक्सपेरिमेंट करथिले तंगर से विषय से लिखिथिले ऑटोबायोग्राफी ठीक अछि जल जेल थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया। इंडिया रो लिटरेसी साक्षरता हार केते थिला 2011 जनगणना अनुसार 74.04% 74.04% थिला इंडियन लिटरेसी रेट। तपरे 2011 सेंसस अनुसार व्हिच इंडियन स्टेट हैव द लोएस्ट सेक्स रेशियो हाईएस्ट सेक्स रेशियो हम पढ़ले कोठी केरला थिला तपरे लोएस्ट सेक्स रेशियो होची हरियाणा। लोएस्ट सेक्स रेशियो माने कोन माने 1000 पुओ रे केते जण झियो थिले सबटु कम थिले कोठी हरियाणा रे 1000 पुओ रे कम थिले हरियाणा अधिक करथिले ना केरला रे मन 2011 जनगणना अनुसार इंडिया स्टेट को स्टेट रे लोएस्ट सेक्स रेशियो हरियाणा हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरला। इन द केस ऑफ अ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेस पार्लियामेंट कोन
Next question. In the case of a deadlock between the two houses parliament, the joint sitting presided over by the speaker of Lok Sabha. ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଜଏଣ୍ଟ ସେସନ ହୁଏ ଜଏଣ୍ଟ ସେସନ ତାର କିଏ କରେ ହେଡ୍ କିଏ ଥାଏ ନା ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଲୋକସଭା. In the case of a deadlock between the two houses parliament, the joint sitting is presided over by the speaker of the Lok Sabha. Next question. In which year Swami Vivekananda established the Ramakrishna mission at Belur? Ramakrishna mission କୋଉଠି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ବେଲୁରରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ କାହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ 1897 ମସିହାରେ ମନେ ରଖିବେ 1897 ମସିହାରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ କୋଉଠି ବେଲୁର ମଠ ବେଲୁରରେ ହେଲା. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ. Oxygen which is vital for life is a product of photosynthesis and comes from water. Oxygen is a vital role କରୁଛି the product of photosynthesis and comes from water ଆସୁଛି बिना वाटर कौन photosynthesis कौन हो पारिबनी ठीक अच्छे मन रखिए. Next question. The battle of Plassey was fought on dash between Sirajuddaulah and Lord Clive, British East India Company. एटा बैटल ऑफ प्लासी हेतला 1757 23 जून रे केबे 23 जून 1757 इयरटा मोस्ट इंपोर्टेंट नोखिबे 1757 23 जून रहितला कहा मध्य रे ना सिराजुद्दौला एवं ब्रिटिश इंडिया कंपनी मध्य रहितला. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रो हेड थिला के लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला मध्य रहितला 1757 रे बैटल ऑफ प्लासी युद्ध. The major constituent of गोबर गैस बा बायोगैस बा नेचुरल गैस परीक्षा रे केतोली कोन लेखा हेतबो तीनटा लेखा नतो केबे भी. तो मेजर कन्स्टिट्यूशन ऑफ बायोगैस इनपुट तो कोन मिथेन. तो मेजर कन्स्टिट्यूशन ऑफ नेचुरल गैस कोन आंसर होची मिथेन. तो मेजर कन्स्टिट्यूशन ऑफ तो मेजर कन्स्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस आंसर होची मिथेन ठीक अछि. The province of Bengal was partitioned into two parts in 1905 by Lord Curzon. ला जोरा बंग विभाजन करे बंग विभाजन हेतला जोटा कि ईस्ट बेंगल वेस्ट बेंगल भाबरे रखि बतले लॉर्ड कर्जन हला लॉर्ड कर्जन. आंसर होची लॉर्ड कर्जन 1905 से. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन के थिले ना बी.आर. आंबेडकर थिले ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन. नेक्स्ट क्वेश्चन. बेकिंग कोरियर रियल एस्टेट पावर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड बिजनेस सर्विसेज कम्स अंडर व्हिच सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. एटा होची टर्शियरी सेक्टर रो अंडर जाउची मन रखिबे. टर्शियरी सेक्टर होची बैंकिंग कोरियर रियल एस्टेट पावर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड बिजनेस सर्विसेज सब जाउची टर्शियरी सेक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग व्हिच फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट महात्मा गांधी जी gave the call for do or die on 8th August 1942. एटा होची क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छाड़ो आंदोलन रे गांधी जी कहते डू और डाई करवा मर. एटा आरंभ होता 8 अगस्त 1942 मन रखिए. भारत छाड़ आंदोलन 8 अगस्त 1942 स्टार्ट होता करवा मर आंदोलन डाकरा देते गांधी जी. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन 1867 केशव चंद्र सेन हेल्प्ड कौन आत्माराम पांडुरंग फाउंड द प्रार्थना समाज इन डैश. कोठी से प्रार्थना समाज फाउंड करथिले बॉम्बे महाराष्ट्र रे. कोठी बॉम्बे महाराष्ट्र रे प्रार्थना समाज फाउंड करथिले किए आत्माराम पांडुरंग का हेल्प रे केशव चंद्र सहायता रे आत्माराम पांडुरंग फाउंड करथिले प्रार्थना समाज बॉम्बे महाराष्ट्र रे 1867 रे. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन व्हिच 5-year प्लान रिमूवल ऑफ पॉवर्टी गरीब हटाओ और रिमूवल ऑफ पॉवर्टी and self reliance declared as major plan objective.
एटा होची 5th 5 ईयर प्लान आंसर होची 5th 5 ईयर प्लान एटा थिला गरीबी हटाओ मन रखिबे को 5 ईयर प्लान थिला गरीबी हटाओ ना 5th 5 ईयर प्लान मेन ऑब्जेक्टिव थिला नेक्स्ट कालबेलिया फोक सॉन्ग एंड डांस एटा होची कालबेलिया ओटे लोक नृत्य लोक गीत मध्य expression of the Kalbelia community traditional way of life it is associated with which state এটা কোন স্টেট র লোক নৃত্য কালবেলিয়া এটা হচ্ছে রাজস্থান ওটা রাজস্থান স্টেট র লোক নৃত্য বা লোক গীত মধ্য কালবেলিয়া নেক্সট কোশ্চেন খান আব্দুল গফর খান অলসো known as বাদশাহ খান বা ফ্রন্টিয়ার গান্ধী formed a non-government organization named so a non-government ऑर्गेनाइजेशन फाउंड करथला ता नाउ जी खुदाई खिदमतकार के फाउंड करथले खान अब्दुल गफर खान जाको सीमांत गांधी बोली कह जाय फ्रंटियर गांधी और बादशाह खान बोली मते कह जाय खान अब्दुल गफर खान कौन फाउंड करथले खुदाई खिदमतकार नेक्स्ट क्वेश्चन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी इज एन एम्प्लॉयमेंट स्कीम that was launched in 2005 to provide social security by guaranteeing minimum of dash days paid work per year to all the families whose adult members of two for unskilled labor intensive work केते दिन पर्यंत रोजगार देबे ना ग्यारंटी रोजगार होची 100 दिन पर्यंत हला होची कोन मनरेगा होची फुल फॉर्म कोन मनरेगा तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट MGNREGA এটা হচ্ছে 2005 রে লঞ্চ হইতলা মনে রাখবে मनरेगा কেবে লঞ্চ হইতলা 2005 রে কেতে দিন পর্যন্ত রোজগার দিয়ে দিব না 100 দিন পর্যন্ত पर ईयर हला बस नेक्स्ट क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट GNP minus NNP equal to सोची डेप्रिसिएशन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट रु हम नेशनल प्रोडक्ट माइनस करले हम पाइबा डेप्रिसिएशन नेक्स्ट क्वेश्चन द फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हमर कोडेस्टिन यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो आछि फंडामेंटल राइट आछि फंडामेंटल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन द सत्रिया डांस फॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द 15th century AD by the dash the great वैष्णव सेंट एंड रिफॉर्म ऑफ आसाम हम जानसे आसाम रो क्लासिकल डांस होची सत्रिया क्लासिकल डांस होची 8टा इंडिया होची सत्रिया होची आसाम रो क्लासिकल डांस जे ग्रेट वैष्णव थिले तंगना होची कोन महापुरुष शंकरदेव से इंट्रोड्यूस करथले फर्स्ट टाइम 15th century रे हला 15th century इंट्रोड्यूस करथले के महापुरुष शंकरदेव मन रखिएडा नेक्स्ट क्वेश्चन द सत्रिया डांस हैज डेवलप्ड फ्रॉम द मोनास्ट्रीज जोटा हमरो कोडी आसाम रे हला द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी हमरो लॉन्गेस्ट ह्यूमन बॉडी रो बोन होची फेमस शॉर्टेस्ट बोन होची स्टेफिज होची हमरो कोन काने रे तीनटा बोन होची हला मैलियस इंसस स्टेफिज तीनटा बोन होची काने रे तो स्टेफिज होची कोन स्मॉलेस्ट बोन होची हमरो शरीर रो सबटा स्मॉलेस्ट बोन और लॉन्गेस्ट बोन होची फेमस जोटा की जंघ रे होची जंघ थाई बोन कोनती फेमोरटा हला नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर द मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड और नॉइज और इंटेंसिटी को मापिया पई कोन यूज करते हैं डेसिबल हला डीबी स्मॉल डी कैपिटल बी डेसिबल कहते एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड डेसिबल व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत कोन को आर्टिकल द हमर डील करछि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40 आर्टिकल 40 रे हमर कोन अछि ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत अछि नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द राइट एगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होछि आर्टिकल 23-24 आर्टिकल 23-24 होछि कोन right against exploitation next question which article of the Indian constitution guarantee the protection of the life and personal liberty guarantee दोछि कि article 21 next question
Which constitutional amendment act added part IX पंचायत राज सिस्टम टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट एक्ट अनुसार पार्ट IX जो थिला पंचायत राज सिस्टम इंडिया आड हेतला 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट केबे थिला 1993 1993 रे हेतला 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि पार्ट IX आड हेतला पंचायत राज सिस्टम नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन reduce the age of voting from 21 to 18 for the election to Lok Sabha to the legislative assembly of the state मतलब voting एज थला आगु 21 ताकू कमे की 18 करा जायतला सेटा होची 61st अमेंडमेंट एक्ट हेतला हला 61st अमेंडमेंट एक्ट हेतला जो कि कोन voting एज ताकू रिड्यूस करा जाय की 18 करा जायछि नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच द ओल्डेस्ट वेद अमंग द फोर वेद सबुठारु चारटा जो वेद अच्छी है ऋग वेद सबुठारु कौन ओल्डेस्ट वेद आ तीन टा वेद कौन साम वेद यजुर्वेद अथर्ववेद चारटा वेद सबुठारु ओल्डेस्ट वेद होची कौन ऋग वेद नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन सोची आंसर होची कौन गुजरात होची लार्जेस्ट वा लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन होची हम इंडिया रो 9टा स्टेट अच्छी जोटा कि कोस्ट लाइन दार अच्छी समुद्र कूल को लगी से स्टेट 9टा जो गुजरात होची तार लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट मन रखिए है नेक्स्ट होची व्हिच विटामिन इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन दैट प्लेज ए रोल इन ब्लड क्लॉटिंग बोन मेटाबॉलिज्म एंड ए रेगुलेटिंग ब्लड कैल्शियम लेवल आंसर होची विटामिन के है विटामिन के एटा होची फैट सॉल्युबल विटामिन के फैट सॉल्युबल जोटा कि कौन पानी रे डिजोल्व होएनी गोटे ट्रिक अच्छी कीड़ा KEDA है KEDA कीड़ा विटामिन के विटामिन ई विटामिन डी विटामिन ए ये हूँ फैट सॉल्युबल माने पानी रे डिजोल्व होएनी आउ जा रहला विटामिन सब पानी रे डिजोल्व हो जिवे वाटर रे डिजोल्व हो जिवे माने मिसी जिवे विटामिन बी विटामिन सी ये कौन पानी रे डिजोल्व हो जिवे है who defeated whom in the second battle of Tarain हेतला 1192 रे एतरे के काको डिफीट करथिले मोहम्मद गोरी डिफीटेड पृथ्वीराज हला मोहम्मद गोरी डिफीट करथिले का पृथ्वीराज को 1192 बैटल ऑफ ताराइन रे नेक्स्ट क्वेश्चन हु फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एंड रिवाइव द नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंड करथिले धर्मपाल फाउंड करथिले विक्रमशिला यूनिवर्सिटी आउ रिवाइव करथिले नालंदा यूनिवर्सिटी को हला पुणी आउ थरे कंस्ट्रक्शन करथिले नालंदा यूनिवर्सिटी के धर्मपाल मन रखिबा धर्मपाल फाउंड करथिले विक्रमशिला यूनिवर्सिटी आउ रिवाइव द नालंदा यूनिवर्सिटी कोड अछि जेटा बिहार रे कोडी बिहार दे आर आल्सो कॉल्ड एम्फिबियन ऑफ द प्लांट किंगडम का को कोजे एम्फिबियंस प्लांट किंगडम तो ना ब्रायोफाइट को कहते कौन एम्फिबियन नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हिच स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट आउथर क्वेश्चन दे दी केरला राज्य सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट हैला नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर फेल्योर ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास फाउंडेड ए पार्टी ना कोन थला पार्टी ना स्वराज्य पार्टी हैला स्वराज्य पार्टी के फंड करथिले मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एतले फेल्योर हेतला असहयोग आंदोलन तापरे अमजद अली खान इज ए मेस्ट्रो विथ व्हिच इंस्ट्रूमेंट तो सरद प्लेयर हैला सरद बजांदी के अमजद अली खान नेक्स्ट क्वेश्चन फेमस डांस पर्सनालिटी केलुचरण महापात्र इज एसोसिएटेड विथ व्हिच डांस फॉर्म जैसे ओडिसी डांस करती किए केलुचरण महापात्र है किए कौ डांस फॉर्म करती बहुत थर परीक्षा आसुची तो यहाँ भलसे मन रखिए केलुचरण महापात्र हूँ ओडिसी डांस नेक्स्ट क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सो पार्ट 3 भाग 3 अच्छी फंडामेंटल राइट्स मेंशन अच्छी पार्ट 3 नेक्स्ट क्वेश्चन इन डैश लॉर्ड कर्जन द वाइसरॉय ऑफ इंडिया अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल पार्टीशन ऑफ बेंगल के अनाउंस होता 16 अक्टोबर 1905 रे बाय लॉर्ड कर्जन है बंग विभाजन होता 16 अक्टोबर 1905 अनाउंस करता लॉर्ड कर्जन
नेक्स्ट क्वेश्चन इन 1932 the Pune Pact was signed between the Mahatma Gandhi and Dash. Pune Pact साइन होता है 1932 रे बाबा साहेब आंबेडकर एवं महात्मा गांधी को मध्य रे होता पुन्ना पैक्ट 1932 मसीहा रे गांधीजी एवं बी आर आंबेडकर मध्य साइन होता पुन्ना पैक्ट पुन्ना कौन जार ए नूतन ना हूँ पुणे महाराष्ट्र पुणे है इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट गिवन महाअभियोग जो प्रस्ताव एटा को आर्टिकल लिखाई राष्ट्रपति आनी परिबा जो आर्टिकलटा होची आर्टिकल 61 मन के आर्टिकल 61 होची इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 होची इम्पीचमेंट मोहिनीअट्टम बिलोंग्स टू डैश इन इंडिया टेक्स इट्स नेम फ्रॉम द सेलेस्टियल एन्चेंट्रेस मोहिनी एटा केरला हला मोहिनीअट्टम और कथकली दुटा डांस क्लासिकल डांस फ्रॉम केरला रुक्मिणी देवी अरुंदाले एसोसिएटेड विथ व्हिच इंडियन क्लासिकल डांस एटा होची भारतनाट्यम हला भारतनाट्यम रो फेमस 10टा 12टा फेमस डांस हम यूट्यूब रे ऑलरेडी वीडियो सब क्लासिकल डांस रो फेमस पर्सनालिटी जो माने सब अछंती तांको नाम तो डांस वीडियो सब अच्छी शॉर्ट्स से अपलोड होई अछि अपन देख परिबे ठीक अछि मनके रुक्मिणी देवी अरुंदाले होतंती भारतनाट्यम डांसर रुक्मिणी देवी अरुंदाले भारतनाट्यम डांसर नेक्स्ट क्वेश्चन स्कॉर्वी disease of skin is caused by deficiency of which vitamin आंसर होची विटामिन सी अभाव स्कॉर्वी होता है मतलब तापर नेक्स्ट क्वेश्चन शेर खान डिफीटेड डैश एट चौसा 1539 एंड कनौज May 17 1540 फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान से ईरान पड़े है किए हुमायूं शेरशाह डिफीटेड कले ह्यूमान को कौटी बैटल ऑफ चौसा 1539 रे हला पुनी कानौज भी हरेले 1540 रे तापर से कोन ईरान पळैथिले हला लुचि हुमायूं को हरेथिले के शेरशाह हला नेक्स्ट क्वेश्चन द ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग इज प्रोड्यूस्ड डू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ गैस ताउची मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस हेले कोन greenhouse effect or global warming is produced due to presence of excess अधिक amount है methane और carbon dioxide. Next question, the 15th FIH Women's Hockey World Cup 2023 was organized in which को शहर रे FIH Hockey World Cup 2023 होस्ट हेतला एटा होची भुवनेश्वर और राउरकेला हैला इंडिया रे होस्ट करतला भुवनेश्वर एवं राउरकेला रे हेतला राउरकेला विश्व मुंडा हॉकी स्टेडियम अच्छी है कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर अच्छी हॉकी स्टेडियम तो सीटी आम हॉकी वर्ल्ड कप 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक वाज एस्टैब्लिश्ड बाय व्हिच नेशनल लीडर टुगेदर विथ हिज फॉलोअर इन 1939 ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया आंसर होची सुभाष चंद्र बोस है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक वाज एस्टैब्लिश होता का द्वारा सुभाष चंद्र बोस को द्वारा 1939 मसीह ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापना करते 1939 मसीह सुभाष चंद्र बोस नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम होची बेकिंग सोडा नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया एंड फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज हेल्ड इन फर्स्ट जनरल इलेक्शन हम हेतला कोठी 1951 रे फर्स्ट अमेंडमेंट भी 1951 मन रखिए 1951 फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेतला जनरल इलेक्शन एवं फर्स्ट अमेंडमेंट Next question, the first Olympic Games for the modern era opened in the dash on 6th April 1896. It first time Olympic कोठी होस्ट हेतला एटा होची एथेंस ग्रीस रो कैपिटल होची एथेंस ग्रीस रो कैपिटल एथेंस से होस्ट करथला फर्स्ट टाइम ओलंपियन गेम्स हला ओलंपिक गेम्स 1896 मन के प्रति 4 वर्ष थरे ओलंपिक गेम आ जेतो हुए 1896 हेतला फर्स्ट टाइम एथेंस ग्रीस से नेक्स्ट क्वेश्चन द monetary and credit policies from monetary और credit policy framed announced by the Reserve Bank of India announce करथला monetary और credit policy the Nobel God of small things is a creation of which novelist the Nobel God of small things एटा बहुत थर परीक्षा आछि अरुंधति रॉय लिखिछन्ती हला नो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिखिछन्ती अरुंधति रॉय हला ऑथर नेक्स्ट क्वेश्चन द
ସୁଇସାଇଡାଲ ବ୍ୟାଗ୍ସ ବା ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ବ୍ୟାଗ୍ ବି କୁହାଯାଏ ବା ଆଟମ୍ ବମ୍ ବି କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ ନା ଲାଇସୋଜମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମଘାତୀ ଥଳି, ଏଟା ଲାଇସୋଜମ ହେଲା। ସୁଇସାଇଡାଲ ବ୍ୟାଗ୍ ବା ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ବ୍ୟାଗ୍ ବା ଆଟମ୍ ବମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଲାଇସୋଜମ। ଉସ୍ତାଦ ଆଲା ରଖା କୁରେଶୀ also known as Allah Rakha was associated with which musical instrument? ସେ ଜଣେ ତାବଲା ବାଦକ ହେଲା। ତାବଲା ବଜାନ୍ତି କିଏ? ଉସ୍ତାଦ ଆଲା ରଖା କୁରେଶୀ। ଉସ୍ତାଦ ଆଲା ରଖା କୁରେଶୀ। Next question, what is the deposit on iron in the process of galvanization? କାହା डिपोजिशन जाए कौन आयरन जो गाल्वानाइजेशन हुए प्रक्रिया जिंक हैला। What is the deposit on iron in the process of galvanization? होची जिंक हैला, जिंक डिपोजिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the traditional bamboo dance of Mizoram called? मिजोरम रे गोटे बाम्बो डांस पाजे, से डांस ना कोन छेदाउ डांस, कोन छेदाउ डांस। तो पॉडकास्ट पाजे छेदाउ डांस रिलेटेड टू व्हिच स्टेट? होची मिजोरम हैला। मिजोरम रे बाम्बो डांस पाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of the Constitution of India belows the right of equality and guarantee that the state will prohibit discrimination against any citizen on ground only religion, race, caste, sex, place of birth, any of them? Answer होची आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 डेल कौन कोचे guarantee that the state will prohibit discrimination against any citizen on ground only of religion, race, caste, sex, place of birth, any of them. Article 15. Next question, এটা last question, which countries permanent member of the UN Security Council? UN Security Council रे permanent 5 जन मेंबर थांती और 10 जन नॉन परमानेंट मेंबर थांती। ठीक अछि। तो यूएसए, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस मतलब कि 5टा परमानेंट मेंबर यूएसए, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस। यूएसए, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस 5टा परमानेंट मेंबर थांती और 10टा नॉन परमानेंट मेंबर थांती। तो सब तो गोटे वीडियो पढ़ले मन रहबनी, बहुत लंबा है जीवो, तेनको जे एतिक थाउ ई पार्ट रे। नेक्स्ट आउ 100 क्वेश्चन हमें सेकंड पार्ट रे हमें पढ़िबा। तो यदि आपनको क्लास टी भल लागि तो वीडियो को लाइक कर दियंतु एवं फ्रेंड मन सहित शेयर कर दियंतु। चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब रखंतु मोर अपडेट पाई। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।